सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी। ओके, हम लोग आज ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक आध वीडियो देखेंगे। उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। और छोटी क्लास होगी आज, ठीक है। 45 या 50 तक एंड हो जाएगी। स्टार्ट हम लोग इससे करते हैं, आईक्यू क्विज से, ठीक The rules. There are 15 questions, and you have 15 seconds to answer each one. Every right answer gets you a point. And don't be dumb. Write down your score and share it in the comments afterward. Let's get started. Question 1. Which shape comes next in the sequence? A, B, C, or D? है। चलिए, अभी हैंड्स रेज करने की जरूरत नहीं, वैसे ही देखे बताएं मुझे। हम्म। डी। फॉर वो पूरा बोलिए। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। अबू बकर, आपका आंसर यही है या कुछ और है? यस मैम। सेम। अब्दुलरहमान, रीजन बताएंगे क्या है? अगर आप अपना यस। मार्कर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जी। जी। मिस ये फर्स्ट शेप में आप देखेंगे कि ब्लैक शेप है, दूसरे में हम्म। वाइट, तो ऑल्टरनेटिव हो रहा है कलर। ठीक है, तो ब्लैक इसलिए वाइट और वाइट ब्लैक, तो अब वाइट वाइट। में से तो होगा। ठीक है, वाइट वाइट में में से से होगा होगा ए आंसर। या डी। लेकिन मैं सही है। आइडेंटिफाई ऐसे किया कि डी है, क्योंकि आप देखें जो भी हर शेप है, लाइक इसका जो है ये वाला कॉर्नर, हम्म। सबसे बॉटम वाले लेफ्ट कॉर्नर पे एक्स है। फिर दूसरा शेप में मिडिल पे एक्स है। ठीक है। फिर थर्ड वाले में उसके दूसरे वाले कॉर्नर पे एक्स है। सही है। लास्ट फोर्थ वाले में भी एक दूसरा वाला होना चाहिए, तो ये वाला इसलिए कॉर्नर ना। सही है। जी। ठीक है, ठीक है, ये पूरी, ये यानी कि समझे, इस डायरेक्शन। एक मिनट, कहाँ गया? ये पूरा इस डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, ठीक है। और उसी तरह से ये जो है इस डायरेक्शन में, तो उसे फिर हमें पता चल रहा है कि डी होगा। चलिए, जबरदस्त। Stop! This is easy, Airhead. The answer is D. Just look at how the hexagon and X switch colors, and how the X and circle move clockwise. That's why D is correct. Question 2. If all bloops are razzles and all razzles are gleepos, then all bloops are definitely what? A. Gleepos, B. Razzles, C. Bloops, D. None of the above. अच्छा, अब हैंड रेज करें क्योंकि फिर चार लोग हो गए ना, तो मुश्किल होगी फिर। हैंड रेज करके बताइए। जी, आ रहे? मैम ग्लूकोज। विच वन? ए बी सी डी? ए। ए। किसी का ए के अलावा कोई आंसर हो तो बताएं। बी। बी। एक मिनट, मुझे दोबारा सवाल पढ़ने दे। इफ ऑल ब्लूप्स आर रेजल्स एंड ऑल रेजल्स आर ग्लीपोज, देन ऑल ब्लूप्स आर। अब्दुलरहमान, आपका आंसर बी है? अच्छा, दोबारा चेक करिए जरा अपने आंसर को। Stop! If you didn't pick Gleepos, congrats. You've just shown you don't get basic logic. Here's the deal. All bloops are razzles, and all razzles are gleepos. So that means all bloops have to be gleepos, you idiot. Question समझ आ गया ना? ठीक है, देख ले। जी। ओके, ओके। razzles are gleepos. So that means all bloops have to be gleepos, you idiot. Question 3. How many times can you subtract 10 from 100? A, 10 times. B, once. C, 9 times. D, as many as you want. रुके, जरा सोचने देंगे सबको, थोड़ा सा टाइम ले ले।
जी स्माइल। मैम 10 times। फर्स्ट वन ओके। आरिफ। मैम इट्स वंस क्योंकि if you subtract 10 from 100 once, then after that you're subtracting 10 from 90। ये यस इट्स चीज। वंस। आप अब्दुलरहमान, आपका भी सेम आंसर है, जबरदस्त। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले कहीं भी सॉल्व किया हो या अभी फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि आप दोनों इतना मुझे याद एक्यूरेट। पड़ा हमने समर कैम्प में किया था। ये वाला एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, मतलब इस यस, जैसा। अच्छा अच्छा, ओके पिछले चलिए। वाले समर कैम्प में। अरे आपको भी ऐसी याद आ रहा है या फिर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कोई क्लास मिस हो जाती है। मैम हो सकता है मैंने इस तरह का केवल हो सकता है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, हाँ हो जाता है कभी कभी यार, सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं, सही है। देखिए बहुत ट्रिकी था। Stop! The answer is B. Once. You can only subtract 10 from 100 once, you moron, because after that you're subtracting from 90. If you thought you could keep going, maybe math isn't your thing, huh? Question 4. अच्छा, ये इनके ना थोड़ी सी लैंग्वेज का इशू है। इडियट और इस तरह के वर्ड्स यूज करें, प्लीज इग्नोर दोज, ठीक है? लेकिन अदरवाइज ये एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे हैं ना, मुझे इसलिए वाला क्विज सेलेक्ट करना पड़ा, ठीक है? सो वी कैन इग्नोर। How many triangles do you see in the picture? A, 9, B, 13, C, 17, D, 15. अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखनी है, ठीक है? इसलिए कोशिश करूंगी कल की क्लास संडे को भी हो जाए, सही। अब अभी रुक जाए, अभी कैलकुलेट करें फिर हैंड रेस करें। कर ले सब लोग आराम से कैलकुलेट करके फिर हैंड रेस करें। अ, और भी बताएं, अबू बकर और बाकी सब लोग ट्राई करें, शाबाश। जी अब्दुलरहमान, आप बताएं। 13। अच्छा, अबू बकर अब्दुलरहमान 13 कह रहे हैं। ओके। मेरे ख्याल से आरिफ का भी सेम आंसर होगा, तभी हैंड डाउन कर दिया उन्होंने। इस्माइल, आपका कोई और आंसर है क्या? मैम 13। 13 तो ठीक है, जब सेम आंसर हो तो हैंड डाउन कर दिया करें। Stop! The answer is B, 13. Seriously, you couldn't count the 13 triangles? Here, let me do the hard work for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. See? 7, एक 8. दफा और देख लेते हैं, जिनको नहीं क्लियर हो ना उनको क्लियर हो। Stop! The answer is B, 13. Seriously, you couldn't count the 13 triangles? Here, let me do the hard work for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. See? All right, under your. ये ऐसे करते हैं ना उससे में। इनके चैनल का नाम ही ये है, द एंग्री एक्सप्लेनर। अच्छा रुकिए जरा एक सेकेंड। चले, एआई पर मुझे एक वीडियो प्ले करनी थी, दो करनी थी, एक ही हो पाएगी आज, मैं वो प्ले कर देती हूँ, सही है? आई होप शो हो रहा हो। यस। मिस्ट्री साइंस है चैनल, ठीक है? इसके हाउ डज एआई वर्क। Hey, it's Esther. My friend did this video while riding in a car. Watch the steering wheel turn and see if you notice. Hey, it's Esther. My friend took this video while riding in a car. Watch the steering wheel turn and see if you notice something strange. There's no one driving. This is what's sometimes called a self-driving car. Instead of a person driving, the car is controlled by a computer system with artificial intelligence. You've probably heard about artificial intelligence or AI. Like maybe you've heard that AI can chat with you online. You type a question and it answers. Or maybe you've heard that AI can make pictures, like this AI image of a made up animal. Someone named Damari is curious about AI. Let's give Damari a call now.
Hi, Esther. Hey, Damari. I have a question for you. How does AI work? That's a great question. AI is changing so fast that we can't cover everything in one video. I just mentioned a few things that AI can do today: drive cars, chat, and make pictures. These things are really different. You might wonder how AI does them all. But if I told you my friend could do all these things, that wouldn't be so surprising. People can learn to do different things, and learning is a big part of how AI works. So let's start with some ways that you learn, like how this baby is learning. They're making a mess, but watch closely. What do you think this baby is learning? Now would be a good time to pause the video and discuss. बताएं आप लोग के जहन में क्या आ रहा है कि ये बेबी क्या क्या लर्न कर रहा है। वैसे ही अनम्यूट करके बोल दें। जब ये इस तरह खा रहा है तो ये इसकी क्या लर्निंग हो रही है, कोई जो भी पॉइंट जहन में आ रहा है बताएं। खाना सीख रहे हाँ शहरियार। खाने को खाना सीख रहे खाना 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 सीख रहा है। व्हाट एल्स और बताएं, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में जाए। छोटी छोटी चीजें ये क्या मतलब के सीख रहा होगा, और खाने के ही प्रोसेस में मैम अपना मूवमेंट सीख रहा है, मूवमेंट्स कैसे करते मूवमेंट सीख रहा है। अच्छा और बताएं अब्दुलरहमान। खाना सीख तो नहीं रहा है अभी, लाइक, लेकिन फिर भी खाना वो प्रॉपरली कैसे खाते हैं। प्रॉपरली कैसे खाते हैं, लेकिन और भी खाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। सोचे ना, सारे स्टेप्स सोचे कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये मुझे नहीं तो करना पिक फूड, चाहिए। है। हाउ टू पिक फूड, खाना हाथ में हाँ कैसे ओके, लें। खाना हाथ में लेने का तरीका क्या है, ठीक है। व्हाट एल्स। और बताएं और बताएं। कोई भी पॉइंट आप लोग के जहन में आ रहा हो। अगर मैं मतलब अब मूवमेंट ना, कि अगर मैं ऐसे मुंह में नहीं डालूंगा तो फिर ये गिर जाएगा नीचे, ठीक है, फिर दोबारा उठाना होगा। कोई और पॉइंट अगर आप लोग के जहन में आ रहा हो, वैसे मैं देखना चाह रही थी कि किस तरह आप लोग का, क्योंकि ना ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह जो की जाती है ना, इसमें यही चीज मैटर कर रही होती है कि आप कितनी स्मॉल डिटेल्स हैं, माइन्यूट डिटेल्स, उसको आप लोग कंसिडर कर रहे हैं। अदरवाइज नहीं करेंगे, प्रोग्राम तो बन जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाएगा, गेम बन जाएगा, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर उसके अंदर छोटे छोटे ना एरर्स बहुत सारे आएंगे जो आपने बनाते हुए नहीं सोचे थे। ठीक है, चले वीडियो प्ले करती हूँ फिर आप लोग को इंशाल्लाह। Okay, ready? Maybe you guessed that this baby is learning to feed themselves. For any baby, it takes a lot of tries to get food in their mouth. They learn from what works and from what doesn't. Each time a baby tries something, their brain gathers information and starts to notice similarities or patterns. When a baby gets older, they can use what they learned from past experiences, combined with what they're noticing now, to figure out how to eat new foods. Now, imagine if instead of learning like this, you came up with step by step instructions for feeding yourself. Like step one, find food. Step two, pick up food. Step three, put food in mouth. But wait, how do you pick it up? A slice of pizza is not like tiny peas. And picking up soup? Totally different. देख रहे हैं आप लोग किस किस तरह हम लोग फूड पिक किस किस तरह करते हैं। एक तो हो गया ना सिंपली पिक अप द फूड पुट इन योर माउथ, ठीक है, लेकिन पिक कैसे करते हैं फूड को, क्या क्या तरीके हो सकते हैं बताएं। वैसे वैसे अनम्यूट करके बता दें, हैंड रेज करने की भी जरूरत नहीं। मैम फोर्क फोर्क पे लगा के, फोक, ठीक है, कंधे पे फोक्स। लगा के। ओके ओके, फोक से कर सकते हैं पिक। व्हाट एल्स। स्पून्स हाँ, स्पून्स स्पून, हाँ स्पून से कर सकते हैं। फोर्क एंड स्पून एक साथ। एक साथ फोक एंड स्पून। व्हाट एल्स। अरे भाई हाथ, सबसे पहले हाथ क्यों नहीं किसी के जहन में आ रहा, हाथ से भी पिक कर सकते हैं। अभी तो पिज्जा आप लोगों के सामने हाथ से एंड हमने मैम पिक, चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक से पिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह डिफरेंट चीजें होती है ना। इसी तरह जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, अब किसी को प्रोग्राम करके बताना है, जैसे कोई रोबोट है, ठीक है, अब वो किसी बेबी को फीड कर रहा है, आपको पता है ऐसे रोबोट्स वगैरह अब तो यूज होने लगे हैं, ठीक है, किसी बेबी को, तो उसको बताना पड़ेगा कि इफ फूड इज लिक्विड देन यूज क्या, चॉपस्टिक्स। इफ फूड इज लिक्विड लाइक सूप,
देन यूज क्या होगा? Spoon. स्पून। ठीक है, तो उसको पूरा सिर्फ ये नहीं कि आपने कह दिया पिकअप फूड, अब वो सोचता रहे बेचारा मैं कैसे पिक करूं, वो चॉपस्टिक से सूप पिलाने की कोशिश करता रहे बेबी को। ठीक है ना, तो इसलिए पूरा आपको एक एक स्मॉलेस्ट डिटेल्स को ना एंटर कराना होता है कोड के अंदर ना। Just think of other foods. You'd need specific instructions for each one. That might sound silly for a person, but step by step instructions are one way that computers work. People decide what they want a computer to do and come up with step by step instructions for the computer to follow. You may have heard this called programming. AI works differently. People still decide what they want the computer to do, but instead of step by step instructions, they come up with programming that helps a computer system learn to do a task. How that works gets really complicated and varies a lot. But one way is a bit like this messy learning. Similar to how a baby gets lots of experiences with food, an AI system is given lots of information. So, an AI system designed to make images would get information in the form of pictures. Photographs, drawings, all kinds of pictures. We're talking thousands and thousands. The system is programmed to find patterns in the information, like these pictures of cats. I see a pattern of having pointy ears and furry tails. The AI system can use patterns like these to make new images of cats. But at first, the information is just a digital jumble, and the AI doesn't know what it's looking at. It's a bit like a baby making a mess with food. The program has to try over and over again, making messy mistakes and finding what works better. That's how the AI learns. Let's give the AI system a new task. Make a picture of a unicorn cat. It can use patterns it learns from pictures of cats and patterns it learns from pictures of unicorns to predict what's important to include for something that's part cat and part unicorn. Then it decides how to make a new image. Sometimes AI systems don't get things right. That's why AI systems are programmed to learn from what works and what doesn't in order to improve. Today, some AI systems are able to do complicated tasks like driving, and some can make images of things that seem real but aren't, like this one. Hummingbirds don't actually live inside tulips. This is an image made by AI. This photo was taken in the real world. That's a real hummingbird's nest. See how incredibly tiny it is? This photo and this AI image both seem real, but the AI one is not what happens in real life. That's why it's important to look up other kinds of information to learn more and check facts. So, in summary, AI systems do different things, but the basic way that they work is similar. Instead of following step by step instructions, AI systems work by learning. You learn from experiences and use what you learn to figure out how to do new tasks and make decisions. That's your intelligence. And your intelligence is the inspiration for artificial intelligence. Both you and AI systems learn from what works and from what doesn't work in order to get better at a task. AI is changing fast, and there's much more to explore. Along with impressive things AI can do, there are also big concerns, like how much energy and water is used to run AI. There's lots of debate about when to use AI and what kinds of tasks to use AI for. Since you're growing up in a world with AI, you can be part of figuring out how we use it in the future. It's good to remember that having AI do a task for you isn't the same as trying it yourself. Your brain still needs to learn by doing things. That's part of your intelligence. So stay curious. That's all for this week's question. Thanks, Damari, for asking it. We want to know what you're curious about. It's time to cast your vote. We picked 3 questions that we're thinking about answering.
When this video's done playing, click on the one you're most excited to see answered. Your vote will help us plan for future mini lessons. There are mysteries all around us. Stay curious and see you next week. ये बहुत जबरदस्त चैनल है, के वाला ना, मिस्ट्री साइंस। ठीक है, इसको फॉलो किया करें। और चले फिर इंशाल्लाह हम लोग इधर कल या परसों मिलेंगे, मैं अपडेट कर दूंगी ग्रुप पे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।